Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the next major group of Protista, that is plant-like protists or algae. So let's move to the classboard. Now dear students, plant-like protists. तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं? We have read several times that they are called algae. So these ones, algae, basically they are its singular is alga. अगर एक ही ऑर्गेनिज्म होगा तो वो कहलाएगा alga. Are photosynthetic. Protists. And they carrying out 50 to 60%, 50% to 60% of photosynthesis all over the world. तो 50 to 60% सिर्फ एल्जी कर रहे हैं, सो इट मीन्स बाकी जो रिमेनिंग है वो सिर्फ प्लांट्स करेंगे. क्लियर? रिमेनिंग is performed by means the photosynthesis plants. और प्लांट्स में फिर डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, मीन्स के एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं. और इन 50 to 60% के बाद कितना बच जाता है? 40 to 50%. तो उस 40 to 50% का जो लैंड प्लांट्स हैं वो सिर्फ 10% कर पा रहे हैं, और उसका भी रिमेनिंग जो है, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर लैंड एरिया वो कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि 70% जो है वो अर्थ का वो वाटर है तकरीबन, और 30% के करीब जो है वो लैंड है. इस वजह से जो रिमेनिंग फोटोसिंथेसिस है, यानी कि आधे से ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस जो पूरी दुनिया में हो रही है वो सिर्फ एल्जी कर रहे हैं. रिमेनिंग इज परफॉर्म्ड बाय द प्लांट्स. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इनका जो डिफरेंस है, इनको व्हाई दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांट, क्योंकि प्लांट लाइक हैं. दे आर नॉट प्लांट्स बट दे आर प्लांट लाइक. सो द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम द difference with plants. Two main differences are there. Number one is that of the sex organs. एल्जी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, जबकि प्लांट्स के जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर हैं. Sex organs of algae are unicellular, while those of plants are multicellular.
क्लियर। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ जाइगोट, प्रोटेक्शन ऑफ जाइगोट। जाइगोट आपको पता है फर्टिलाइज्ड एग सेल को जाइगोट कहते हैं, और द जाइगोट of algae is not protected by parental body, while in plants zygote is protected by multicellular parental body। क्लियर। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं, बाकी तकरीबन इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ ही हैं। ये भी ऑटोट्रॉफ हैं, वो भी ऑटोट्रॉफ हैं, इनके अंदर भी सेल वॉल है, उनके अंदर भी सेल वॉल है, और बहुत सारे इनके अंदर मेजर इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनके अंदर रिजेंबलेंसेस मौजूद है, सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इनको वहाँ से एक्सक्लूड किया गया था। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर बॉडी फॉर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉडी फॉर्म्स की अगर बात करें तो दो मेजर इसकी बॉडी फॉर्म्स हैं। टू मेजर बॉडी फॉर्म्स आर देयर। They may be unicellular यानी ये इनकी ग्रोथ फॉर्म है, ठीक है, बॉडी फॉर्म्स और ग्रोथ फॉर्म यूनिसेलुलर। एंड नंबर टू आर फिलामेंटस। फिलामेंटस। अब जो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं उनके अंदर भी वेरिएशन है। अब जो फिलामेंट्स हैं वो इनके अंदर मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। एक जो फिलामेंट्स हैं दे हैव डिस्टिंक्ट cells or choanocytes. Choanocytes, basically these are the special structures, filaments की तरह के होते हैं। चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ेंगे हम। जो फंजाई होते हैं वो भी, उनकी भी फिलामेंट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हाइफी कहते हैं, उनके भी टाइप्स हैं। सो स्पेशल स्ट्रक्चर्स that lack cross walls and are multinucleated or multinucleated, उनको कहते हैं क्वानोसाइटिक। क्वानोसाइट्स या फिर दे आर कॉल्ड एज द डिस्टिंक्ट सेल्स। ये फिलामेंट कुछ इस तरह से होगी, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई इसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, एक ही फिलामेंट है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को या इस तरह के फिलामेंट को कहते हैं क्वानोसाइट्स, या इसको नॉन सबस्ट्रेट हाइफी भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फंजाई, उसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। या दूसरी जो इसकी फिलामेंट की फॉर्म है वो इस तरह से हो सकती है, लाइक इट मे बी ब्रांच्ड, वो ब्रांच्ड हो सकती है, या फिर वो और अरेंज्ड इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। ऐसे पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच होगा लेकिन पत्ते की तरह का उसकी अरेंजमेंट पत्तों की तरह की होगी, लाइक इन द फॉर एग्जांपल द सीवीड्स, फॉर एग्जांपल सीवीड्स, क्लियर। और डियर स्टूडेंट्स, ये दो मेजर यानी कि इनके आगे डिस्क्रिमिनेशंस हैं, फिलामेंटस जो फॉर्म्स हैं, और या फिर एक और है इनके अंदर, दैट इज थैलाइड, थैलस, क्लियर। अब जो थैलस है इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थैलस कहते हैं a body having no true roots, ना तो true roots हो, no true leaves, no true stem, no true stem, no xylem, no phloem। तो दिखने में तो वैसे ग्रीन ग्रीन सा ही है पत्तों की, जैसे लीव्स नहीं है, यानी ट्रू लीव्स नहीं है। ट्रू लीव्स ऐसे लीव्स को कहा जाता है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद हो। ट्रू स्टेम उस स्टेम को कहते हैं जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद हो। ट्रू स्टेम उस स्टेम को कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो। तो चूंकि इसके अंदर ना जाइलम है ना फ्लोएम है, तो इस तरह के रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर होंगे जिनको होल्ड फास्ट या फिर राइजॉइड्स कहा जाएगा। इनके अंदर ट्रू पत्तों की तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे लेकिन उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, उनको हम ब्लेड्स कहेंगे। और इनकी जो स्टेम है वो ट्रू स्टेम नहीं है क्योंकि उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, उनको स्टाइप्स भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इनकी ग्रोथ फॉर्म्स हैं इसकी बॉडी की, क्लियर, बॉडी ग्रोथ फॉर्म्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तकरीबन उसी तरह से मौजूद हैं जैसे कि प्लांट्स के अंदर होती हैं, लाइक they have or they possess chlorophyll A, B, C and carotenoids। इनके अंदर कैरोटिनॉइड्स मौजूद हैं। कैरोटिनॉइड्स में आपको पता है कि इनकी दो तरह के कैरोटिनॉइड्स हैं जिसमें हमने बात की थी, एक तो कैरोटीन्स और दूसरा होते हैं ज़ैंथोफिल्स, क्लियर। ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दे आर रेड टू ऑरेंज, while xanthophylls they are yellow to orange। और इनमें एक खास किस्म की xanthophylls है जिसको कहते हैं फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। और ये बेसिकली ब्राउन और ऑलिव ग्रीन कलर की जो पिगमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से इनके अलावा और भी कुछ एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद हैं इनके अंदर, तो मेन तो वही रहेगी जैसे लाइक इन द प्लांट्स दे आल्सो हैव फाइकोएरिथ्रिन, दे आल्सो पोजेस फाइकोएरिथ्रिन। ये हम देखेंगे जो रेड एल्गी होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है, रेड एल्गी। और डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ, उसकी लास्ट लाइन में ऑलमोस्ट, कि दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी is largely based on
द पिगमेंट्स। तो जिस तरह के पिगमेंट्स होंगी उसी तरह उसी की बेस के ऊपर डियर स्टूडेंट्स इनकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसी लेक्चर में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे कि देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बिहाफ के ऊपर डिफरेंट तरह के एल्गी मौजूद हैं। क्लियर? तो इनकी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस कर रही है? पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स? जो ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, यानी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, उनके बिहाफ के ऊपर। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और इनका करेक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज देयर लाइफ साइकिल्स। तो लाइफ साइकिल्स उनके अंदर एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं, बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है? The algae have extreme variations in their life cycles, लेकिन एक बात ऐसी है जो कि इनमें कॉमन है। ठीक है? One thing is common to all except, अब ये एक्सेप्शन भी आ गई, सब के अंदर है सिवाय, एक्सेप्ट रोडोफाइटा, एक्सेप्ट रोडोफाइटा, या उनको हम कहते हैं रेड एल्गी। एक्सेप्ट रेड एल्गी, ऑल अदर्स जितने भी हैं हैव मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स, मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स at least once in their life forms। इस बात को जरा समझें। जहां तक लाइफ साइकिल्स की बात है तो इन सब के अंदर एक्सट्रीम वेरिएशन है, यानी कि मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में नहीं मिलते सिवाय एक के, जो कि इनके अंदर कॉमन है, और उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि रेड एल्गी की। रेड एल्गी या जो फाइलम रोडोफाइटा से बिलोंग करते हैं एल्गी, ये वाहिद ऐसी एल्गी हैं इनके अंदर किसी भी लाइफ साइकिल के दौरान जो मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं बनते, यानी इनके अंदर वो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ही नहीं किसी भी शक्ल में। बाकी तमाम के अंदर कम से कम एक दफ़ा तो उनकी लाइफ फॉर्म्स में वो मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। ठीक है? ये एक एक्सेप्शन बस याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए, एक्सेप्ट रोडोफाइटा और रेड एल्गी, all others have motile flagellated cells at least once in their life forms or life cycles। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इनकी क्लासिफिकेशन की कि ये किस तरह से हम इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के बिहाफ के ऊपर। क्लासिफिकेशन on pigment basis। Number one are the Euglynophyta, number two the Pyrophyta, number three the Chrysophyta, number four Phaeophyta, number five Rhodophyta, and number six the Chlorophyta। क्लियर? तो ये पिगमेंट्स के बिहाफ के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन है जो कि अभी हम डिटेल से करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको जो टेबल हमारी बुक में गिवन है उसको डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन और ख़ास तौर पर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टेबल है। आगे चलकर हमने यही क्लासिफिकेशन करनी भी है, तो आगे जो हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे
तो बहुत आसान हो जाएगा हमें इसको कैटेगराइज करना। क्लियर? तो जहाँ तक बात करते हैं, पहले फाइलम देख लेते हैं, कौन कौन से फाइलम हमने इसमें डिस्कस करने हैं। सो द फाइलम्स इंक्लूड Euglenophyta, then we have to discuss the Pyrophyta, then Chrysophyta, then Phaeophyta, then Rhodophyta, and the sixth one is the Chlorophyta. Clear? So these 6 phyla have to be discussed. और अब आते हैं इनके common names की तरफ. So as far as their common names are concerned, the Euglenophyta, they are called as euglenoids. They are called as euglenoids. The Pyrophyta, they are called as dinoflagellates. The Chrysophyta, they are called as diatoms. The Phaeophyta, they are called as brown algae. Rhodophyta, they are called as red algae. And the Chlorophyta, they are called as the green algae. Clear? Now, their forms. So, in which form do they exist? So, Euglenophyta, they are unicellular. They are unicellular. Pyrophyta, they are also unicellular, mostly. Chrysophyta or diatoms, they are also clear. And Phaeophyta, they are multicellular. Rhodophyta, they are multicellular as well as unicellular. While the Chlorophyta, means the green algae, they exist in the 3 forms, means unicellular, multicellular, and colonial. Clear? Now, the ways of locomotion. So, if we talk about the locomotion, the euglenoids, they have 2 flagella. One is large and one short. The Pyrophyta, they also have 2 flagella. The Chrysophyta, they usually not, and Phaeophyta, they have flagella. Rhodophyta, they have none. And the Chlorophyta, means the green algae, most of them have flagella. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो ब्राउन एल्जी के पास जो फ्लैजेला हैं, दे आर एट रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो पहले हमने जनरल क्लासीफाई कर लिया, अब इनको बताएंगे. एक डिफरेंस याद रखना है कि ब्राउन एल्जी
उनके दे flagella at reproductive cells। तो किसके पास बिल्कुल भी नहीं है, वो है रोडोफाइटा, जो कि हमने बात की थी कि किसी भी लाइफ फॉर्म में इसके पास मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते। अब आते हैं इनके पास पिगमेंट्स की वाले से, पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो इनके पास मौजूद हैं। सो द पिगमेंट्स इन यूग्लिनाइड्स, दे हैव chlorophyll A, chlorophyll B, and carotenoids. Clear? Pyrophyta, they have chlorophyll A, chlorophyll C, carotenes, and fucoxanthin। आपको बताया था फ्यूकोजैंथिन का, ये जैंथोफिल है जो कि ब्राउन या ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, फ्यूकोजैंथिन। The chrysophyta means the diatoms, they also have chlorophyll A, chlorophyll C, carotenes, and fucoxanthin। The phyophyta means the brown algae, they also have chlorophyll A, chlorophyll A, chlorophyll C, carotenes, and fucoxanthin। Clear? While the rhodophyta, they have chlorophyll A, carotenes, and phycoerythrin। एरिथ्रिन या एरिथ्रोसाइट आपने नाम सुना, रेड कलर को कहते हैं, ठीक है। एंड क्लोरोफाइटा, दे हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एंड द कैरोटिनॉइड्स which are called as carotenes। Carotenes, clear? Which are also present in the plants। Now coming towards the examples, ये सबसे अहम portion है MCQ's point of view से। So as far as the euglenoids are concerned, euglenoids में याद रखिएगा, euglena, clear? Now the pyrophyta, the dinoflagellates, इन्हीं के अंदर दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे बुक में गिवन है। नंबर 1 इज गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स एंड क्यूरेटियम। While the chrysophyta, the diatoms, they consist of, इनकी एग्जाम्पल्स 3 दी गई हैं हमारे बुक में, diatoma, then fracularia, and pinularia। Pinularia, clear? So these are the 3 examples of the chrysophyta or diatoms। Now the phyophyta और brown algae, उसमें एक सबसे important example याद रखनी है आपने, कैल्प्स की, ठीक है। कैल्प्स जो कि 75 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Then is fucus and macrocystis। Macrocystis। And as far as the red algae they are concerned, they consist of, यहाँ पर हमारी बुक में 2 हैं इसमें examples given। Number 1 is Polysifonia, number 2 is the chondrus, number 2 chondrus। और ग्रीन एल्जी में 4 एग्जाम्पल्स गिवन है, alva, then acetabularia, then there is chlorella, and the spirogyra।
So these are the examples of these 6 phyla. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे एल्गी की क्लासिफिकेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।